चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन यानी ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टेप 1, मल्टीप्लाई स्केलर्स इनसाइड मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स कोसिन थीटा टाइम्स द मैट्रिक्स कोसिन थीटा sin थीटा नेगेटिव sin थीटा कोसिन थीटा इक्वल्स द मैट्रिक्स कोसिन स्क्वायर्ड थीटा कोसिन थीटा sin थीटा नेगेटिव कोसिन थीटा sin थीटा कोसिन स्क्वायर्ड थीटा। Second matrix sin theta times the matrix sin theta negative cosine theta cosine theta sin theta equals the matrix sin squared theta negative sin theta cosine theta sin theta cosine theta sin squared theta. Step 2, add the two matrices. Now add both the matrix cosine squared theta cosine theta sin theta negative cosine theta sin theta cosine squared theta plus the matrix sin squared theta negative sin theta cosine theta sin theta cosine theta sin squared theta. Element wise addition. First row first column cosine squared theta plus sine squared theta equals 1. First row second column cosine theta sine theta minus sine theta cosine theta equals 0. Second row first column negative cosine theta sine theta plus sine theta cosine theta equals 0. Second row second column cosine squared theta plus sine squared theta equals 1. Final answer. The matrix whose first row is 1, 0 and whose second row is 0, 1. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलो पार्ट 1 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन Step 1, add the two equations x plus y plus x minus y equals the matrix 7025 plus the matrix 3003. Left side x plus y plus x minus y equals 2x. Right side the matrix 7 plus 30 plus 0 2 plus 0 5 plus 3 equals the matrix 10 0 2 8. To O 2x equals the matrix 10 0 2 8. Step 2, divide both sides by 2 to find x equals 1 half times the matrix 10 0 2 8 equals the matrix 5 0 1 4. Step 3, put x in first equation to find y. Use x plus y equals the matrix 7 0 2 5 and x equals the matrix 5 0 1 4. To the matrix 5 0 1 4 plus y equals the matrix 7 0 2 5. Subtract y equals the matrix 7025 minus the matrix 5014 equals the matrix 2011. Final answer है x equals the matrix 5014, y equals the matrix 2011. चलिए अब क्वेश्चन 7 पार्ट 2 को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन 2x plus 3y equals the matrix 2340, equation 1. 3x plus 2y equals the matrix 2 negative 1 5, equation 2. Step 1. Elimination method हमें 2 matrix equations दी गई हैं 2x plus 3y, 3x plus 2y हम elimination method यूज करेंगे। पहले दोनों equations को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। Let's multiply equation 1 को 3 से equation 2 को 2 से multiply equation 1 by 3 times 2x plus 3y equals 6x plus 9y equals 3 times the matrix 2340 equals the matrix 69120. Multiply equation 2 by 2. 2 times 3x plus 2y equals 6x plus 4y equals 2 times the matrix 2, negative 1, 5 equals the matrix 4, negative 4, negative 2, 10. Step 2, subtract the two new equations 6x plus 9y minus 6x plus 4y equals the matrix 6, 9, 12, 0 minus the matrix 4, negative 4, negative 2, 10. LHS 6x plus 9y minus 6x minus 4y equals 5y. RHS, the matrix 6 minus 4, 9 minus negative 4, 12 minus negative 2, 0 minus 10 equals the matrix 2, 13, 14, negative 10. So, 5y equals then matrix 2, 13, 14, negative 10. Step 3,
Divide both sides by few to get yy equals 1/5 times the matrix 2, 13, 14, negative 10 equals then matrix 2 fifths, 13 fifths, 14 fifths, negative 2. Step 4. Put y in equation. 1 or to dictate x use. 2x plus 3y equals the matrix 2, 3, 4, 0. Put y. 2x plus 3 times the matrix 2 fifths, 13 fifths, 14 fifths, negative 2 equals 2x plus the matrix 6 fifths, 39 fifths, 42 fifths, negative 6. So 2x equals the matrix 2, 3, 4, 0 minus the matrix 6 fifths, 39 fifths, 42 fifths, negative 6. Now subtract 2x equals the matrix 10 fifths minus 6 fifths, 15 fifths minus 39 fifths, 20 fifths minus 42 fifths, 0 minus negative 6 equals the matrix 4 fifths, negative 24 fifths, negative 22 fifths, 6. Now divide both sides by 2. X equals 1/2 times the matrix 4 fifths, negative 24 fifths, negative 22 fifths. 6 equals the matrix 2 fifths, negative 12 fifths, negative 11 fifths, 3. Final answer, Nellige, x की xz or the matrix 2 fifths, negative 12 fifths, negative 11 fifths, 3, y equals the matrix 2 fifths, 13 fifths, 14 fifths, negative 2. चलिए अब क्वेश्चन 8 को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दिया गया है y बराबर है मैट्रिक्स 3 2 1 24 और 2x प्लस y बराबर है मैट्रिक्स 1 0 नेगेटिव 3 3। हमें x निकलना है। Step 1. Substitute y in the equation 2x plus the matrix 3 2 1 4 equals the matrix 1 0 negative 3 2. Step 2. Transpose y to RHS, subtract y from both sides. 2x equals the matrix 1 0 negative 3 2 minus the matrix 3 2 1 4. Matrix subtraction. 2x equals the matrix 1 minus 3 0 minus 2 negative 3 minus 1 2 minus 4 equals the matrix negative 2, negative 2, negative 4, negative 2. Step 3. Divide both sides by 2. Scalar division. X equals 1/2 times the matrix negative 2, negative 2, negative 4, negative 2 equals the matrix negative 1, negative 1, negative 2, negative 1. Final answer. X equals the matrix negative 1, negative 1, negative 2, negative 1. चलिए अब क्वेश्चन 9 को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन 2 बार मैट्रिक्स 1 3 0x प्लस मैट्रिक्स y 0 1 2 इक्वल्स मैट्रिक्स 5 छोटे से 1 8। Step 1. Multiply scalar 2 inside the first matrix. 2 times the matrix 1 3 0 x equals the matrix 2 6 0 2x. Step 2. Add the two matrices on the left hand side, the matrix 2 6 0 2x plus the matrix y 0 1 2 equals the matrix 2 plus y 6 plus 0 0 plus 1 2x plus 2 equals the matrix 2 plus y 6 1 2x plus 2. Step 3. Equate with the RHS matrix. The matrix 2 plus y 6 1 2x plus 2 equals the matrix 5 6 1 8. Step 4. Compare corresponding elements. Element 1 1. 2 plus y equals 5 implies that y equals 3. Element 2 2. 2x plus 2 equals 8 implies that 2x equals 6 implies that x equals 3. Final answer, x equals 3 and y equals 3. चलिए अब क्वेश्चन 3 को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन 2 बार मैट्रिक्स x z y t प्लस 3 बार मैट्रिक्स एक नेगेटिव 1 0 2 बराबर 3 बार मैट्रिक्स 3 5 4 6। Step 1. Multiply scalar values inside the matrices. Multiply 2 inside the first matrix 2 times the matrix x z y t equals the matrix 2x 2z 2y 2t. Multiply 3 inside the second matrix 3 times the matrix 1, negative 1, 0, 2 equals the matrix 3, negative 3, 0, 6. Multiply 3 inside the right-hand matrix. 3 times the matrix 3, 5, 4, 6 equals the matrix 9, 15, 12, 18. Step 2 to add LHS matrices. The matrix 2x 2z 2y 2t plus the matrix 3 negative 3 0 6 equals the matrix 2x plus 3 2z minus 3 2y plus 0 2t plus 6.
Step 3. Equate LHS with RHS. The matrix 2x plus 3, 2z minus 3, 2y, 2t plus 6 equals their matrix 9 copy, 15, 12, 18. Step 4. Compare the elements and form equations. 2x plus 3 equals 9 ko rekachad, which gives us 2x equals 6 and therefore x equals 3. 2z minus 3 equals 15, which gives us 2z equals 18 and therefore z equals 9. 2y equals 12 implies that y equals 6. 2t plus 6 equals 18, which gives us 2t equals 12 and therefore t equals 6. Final answer. X equals 3, y equals 6, z equals 9, t equals 6.